सेकंड ओडीआई है। पहली ओडीआई में तो बहुत पिटाई लगी थी हमारी, अरे और हाँ अनुराग, आज देखना पड़ेगा अनुराग कैसा स्ट्रीम पे जाएगा। शायद साउंड नहीं था, एक बार फिर से जनता को बता दीजिए आप क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी ओडीआई चल रहा है, सेकंड ओडीआई। फर्स्ट ओडीआई में तो बहुत पिटाई लगी थी ओ हमारी, माय गॉड। तो देखते हैं कि आज क्या चलता है। उम्मीद है यार कि इस ओडीआई में कुछ रंग दिखाएंगे। वैसे काफ़ी सारी टीम मतलब चेंजेस हैं टीम में, मैं सुन रहा था कि इस बार काफ़ी सारे स्क्वाड में चेंजेस हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अक्षिका ने कहा कि वी आर नॉट एबल टू, कैन यू हेयर अस अक्षिका नाउ? ओके सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, और दो हमारे गेस्ट हैं उन दोनों को बुलाते हैं। तो अनुराग बताइए आज कौन कौन है हमारे साथ स्ट्रीम पर। यार सबसे पहले तो हमारे साथ हैं शिवानी मल्होत्रा। शी इज एन अवार्ड विनिंग एचआर स्पेशलिस्ट एंड शी इज आल्सो द को-फाउंडर ऑफ पॉजिटिव वाइब्स कंसल्टिंग। तो शिवानी है हमारे साथ, एज वेल एज देवम मल्होत्रा। ही इज आल्सो द को-फाउंडर ऑफ पॉजिटिव वाइब्स एंड ही इज अ सीनियर कॉर्पोरेट मेंटर एंड कंसल्टेंट, ही इज अ स्ट्रेटजी कंसल्टेंट एज वेल। तो दोनों ही गेस्ट हमने आज बुलाए हैं, और जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा लाइव स्ट्रीम है संडेज विद नमस्ते इंडिया, वो स्पेशली करियर ओरिएंटेड है, करियर से रिलेटेड है, और कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इस पूरी जो सिचुएशन है राइट नाउ विद द होल पैंडेमिक और कोविड के चक्कर में जिन लोगों की जॉब्स गई है, या जो लोग अभी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, भले वो फ्रेशर्स हों या एक्सपीरियंस्ड हों, उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से आज का लाइव स्ट्रीम बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट हैं विद अ कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 35 इयर्स। तो आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू वेलकम शिवानी एंड देवम ऑन द शो टुडे। टड़ा। वेलकम शिवानी एंड देवम। वेलकम गाइज, वेलकम। Thank you, Anurag. Thank you, Shivam. Hi, everyone. Good morning. मॉर्निंग मॉर्निंग शिवानी, कैसा जा रहा है संडे का दिन? सॉरी आप लोगों को सुबह सुबह 10:30 बजे थोड़ा ब्रेकफास्ट के टाइम पे उठा दिया हम लोगों ने। नहीं, हमें आदत है बिकॉज हम लोग जो कोर्सेज रन करते हैं वो वी राइट, रन ऑन सैटरडे संडेज because they are targeted for working professionals. ओके। So we are in the habit of getting up early. In fact, I am a part of the 5 a.m. club. I don't know if you have read that book. Oh, yes, yes, I have. Irrespective of a Saturday or a Sunday, a routine is there to get up at 5 o'clock in the morning. So it's totally fine. यस, चलिए, रॉबिन शर्मा का एक और फैन हमारे साथ है, बिल्कुल। तो अमेजिंग। देवम, आपका क्या रूटीन रहता है वैसे? यार मैं शुरू से जल्दी उठने वालों में से हूँ। सो irrespective of what time I sleep in the night, I'm typically up by about 6:37, not beyond that. तो We are हम both दोनों early we are risers. all early risers. We like to begin the day early. So and consulting में रह के तो यार वैसे ही your timings go haywire. So true, so true. But So, I'd really like to recommend this book, The 5 a.m. Club, to our listeners also today, viewers also today, because for me personally, that has been a life-changing book. बहुत ही बढ़िया किताब है। उसका नाम है The 5 a.m. Club and it is written by Robin Sharma. It's not a very expensive book, 150-200 रुपए की किताब है। प्लीज उसे खरीदिए और Amazon पे अवेलेबल है। This book, it will not only tell you why you should get up at 5 o'clock, it will also tell you how can you get up at 5 o'clock, and it's all in the mind कि इतनी सुबह कैसे उठेंगे। बट ऑनेस्टली एक्सपीरियंस में मैं बता रही हूँ कि सुबह के जो 2 घंटे होते हैं 5 से 7 are the best days of my best hours of my day, because they are so productive. There is absolutely no distraction, there are no phone calls, no my child also doesn't wake up, my dog doesn't wake up, so we are all at peace. There is absolutely no distraction, and the most productive work, the creative work, thinking work is all done in those 2 hours. So highly recommended everyone who's on this show. Please do buy this book and read it. It's truly a life changing book. नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि 5 बजे उठना, कैसे उठना वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब सोचते तो सब लोग हैं कि उठ जाएं हम लोग, लेकिन यही सुन के इवन आई एम इंस्पायर्ड कि अच्छा अगर ये लिखा है बुक में तब तो पढ़नी पड़ेगी कि उठना कैसे है सुबह 5 बजे, क्योंकि ये तो सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन कैसे उठेंगे? हाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए। कैसे उठ सकते हैं ये लिखा है उस बुक में। That's where the focus is on the book. And they say now you do this thing for 18 days, it becomes a habit. Right. 18 दिन It does.
आई होप जो है शिवम इस बात का ध्यान रखेंगे और सुबह मैंने 5 बजे सोने जाने के बजाय उठने का प्रयास मैं करेंगे. बुक ऑर्डर कर रहा था अमेजोन पे, व्हेन आई एम लाइक सर्चिंग इन पैरेलल. Anyways, तो शिवानी एंड देवम, टू आवर ऑडियंस हु आर नॉट अवेयर अबाउट यू, प्लीज आप लोग अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी जनता को, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट टुडेस मेन टॉपिक. Shivani, you want to go first? Okay, so I have been, in HR. I'm an HR professional, and I have experience of about 17 years of core HR. Worked in companies like DCM Shriram, Yum Brands, which is the parent company of Pizza Hut and KFC, and also have a bit of international experience in the Middle East with KPMG in Qatar and Bahrain. And in 2016, it was, when I started Positive Vibes Consulting, the entrepreneurial bug bit me, and I thought, let me do something on my own. Honestly, बड़ा difficult decision था, because जो एक paycheck का lure होता है, that's a big pull factor. You know, the end of the month, you have a paycheck coming to you, brings a lot of comfort to the mind. You know, there's a sense of security there. Some people thought I'm crazy कि मैं इतना अच्छा job छोड़ के, पैसे छोड़ के, I'm starting something from scratch. Right. But deep down somewhere, I had this passion that and I had the capability. I knew I had the capability to start something, nurture it, and see to it that it grows into something meaningful and worthwhile. And touch wood, here it is. The journey has been absolutely exhilarating with Positive Vibes. We've achieved many laurels in the course of this journey, and now we are a very well known and well respected consulting firm in the HR circles. Yeah, so that's about me. Thank you. Over to you, Devam. Fantastic. So, just like Shivani, मेरा भी कुछ 16-17 साल का experience रहा है. I've been a career consultant, management consultant रहा हूँ throughout. Started my career, as a supply chain consultant with a company called Bristlecone. Moved over to strategy, worked with IBM, worked with KPMG, worked with PwC. So it's been a very very good and interesting journey. काफी sectors में काम किया करने का मौका मिला, काफी companies के साथ काम करने का मौका मिला, काफी interesting professionals के साथ काम करने का मौका मिला, and in fact I'm one of those guys who actually used the pandemic to leave the job in some form or the other. So I left my career, corporate career, to become an entrepreneur sometime towards end of last calendar year. So around December is when I said, okay, I got to try something different, and ever since it's been a very very interesting journey. I think both at Positive Vibes, I also have I'm a founder of an auto tech platform as well. So वहाँ पे भी काफी interesting journey रही है. So I think overall बड़ा अच्छा रहा है, and I hope to share some of my experiences today with all the audience members there. नहीं, डेफिनेटली वो तो हम आपसे इंफॉर्मेशन निकाल ही लेंगे हमारी जनता के लिए. तो I must say, I must compliment the people who have joined us today, that you guys have taken out time on a Sunday morning, that too at 10:30 in the morning, to listen to something, which means you guys are really really serious about your careers. So thank you to you for joining today's session and wanting to listen to us. I hope we're able to do justice to the 10:30 slot of the morning. Definitely. एक इंफॉर्मेशन जो शिवानी ने अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी नहीं बताई, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. रिसेंटली शी हैज बीन इंडक्टेड इन द एलीट बिजनेस वर्ल्ड एजुकेशन 40 under 40 क्लब, अचीवर्स क्लब. तो शिवानी, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. And Positive Vibes have been doing a lot of good work. So guys, आप लोग LinkedIn पे जाइए, and in fact you can go on Facebook also. You can check them out. Recently they have been accredited with another organization, SHRM. So उसके बारे में बहुत information है, हम आगे बात भी करते रहेंगे. तो शिवम यार, शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन. और
बताइए हमारी जनता को, और शिवानी एंड दिवम को फिर इन्वॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। श्योर। तो सबसे पहला तो जो डिस्कस करना है हमें, वो इस पूरे पेंडेमिक में जिस तरह से करियर्स, रिक्रूटमेंट और ले ऑफ्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग इज़ बीन गोइंग ऑन। तो अब जब धीरे धीरे चीज़ें वापस ट्रैक पे आने लगी हैं, तो सिंस यू गाइज बीन इन टू द इंडस्ट्री, जहाँ आप रिक्रूटर्स को भी फेस करते हैं, आप एम्प्लॉयर्स को भी फेस करते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को भी फेस करते हैं, सो वी वांट टू नो फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ रिक्रूटर्स कि उनका क्या टेक है अभी फ़िलहाल, और क्या उनका माइंडसेट चल रहा है। हाउ आर दे लुकिंग फॉर पीपल, व्हाट आर दे लुकिंग इन पीपल, क्या क्या किस माइंडसेट से फ़िलहाल वो इस फील्ड में दोबारा हंट करने उतरे हैं। वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन शिवम। ऐसा है, आज की मार्केट में कुछ टाइम तक हायरिंग फ्रीज लगा था। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो सडनली मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैड पुट अ हायरिंग फ्रीज, बट नाउ स्लोली थिंग्स आर ओपनिंग अप. Companies are getting back into the hiring mode because businesses have opened up, and up to sab kuch hi khul gaya, everything is open. So but definitely there has been a lot of change in the way hiring is happening now. See, the thing is that sectors like hospitality and sectors like tourism, these are the sectors which have been really very very badly hit, and unfortunately many people have lost their jobs in these industries. So what has happened is that, and there are many other such industries which have faced the brunt of this pandemic. Now what has happened is that suddenly there is a lot of supply in the market of good talent, of excess talent, and demand come hai. Now what has happened is that the recruiters are spoiled for choices. So जी. now it's the criteria to hire someone has completely changed. They want good people because there are enough good people out in the market now. So it's जिसको हम वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, आज की डेट में वही है. The person who is the best suited for the role, and when I say best suited, I don't just mean in terms of the technical or the subject matter knowledge capability of the person. I mean to say a complete package, which means your behavioral skills, which means your ability to work in teams, and the most important criteria in today's time is your ability to adapt to technology. आज की डेट में जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आती उसको जॉब नहीं मिलेगी मार्केट में, गारंटी है ये. So you need to now companies are not going to invest in training people that much because honestly budget constraints हैं, and there are enough trained people available in the market. तो मैं क्यों किसी को हायर करूं जिसको मुझे लेके ट्रेन करना पड़े जब मेरे को ट्रेन लोग मिल रहे हैं. So very important to upskill yourselves in these times. Definitely technology is something that you should be upgrading your knowledge in, knowledge of these kind of platforms like Zoom, Google Meet, and others. How to make presentations on this, how to connect with employees on this, especially for HR professionals. सिर्फ टेक्नोलॉजी आना जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे टू ब्रिंग दैट कनेक्ट इन योर एम्प्लॉइज. सो अगर हम एक साल पहले ये बात कर रहे होते तो मैं शायद जो अभी बोल रही हूँ ये सब जरूरी होता भी नहीं. द मार्केट वाज वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम, बट नाउ द पैंडेमिक हैज कंप्लीटली चेंज्ड द फेस ऑफ द वे the recruiters are, the kind of skills that recruiters are looking now are very very different. Ability to work remotely, how productive are you to work remotely, because most of the organizations are still working remotely, and some organizations have taken a conscious decision कि वो remotely ही काम करेंगे even once this pandemic goes. So so for example, I know of a friend of mine who works with a wealth management company, very famous wealth management company. They had 5 branches in Chandigarh. Now they have taken a conscious decision that they are going to close all the branches, keep one branch active for any customer visits that they are supposed to do, because they are seeing that working from home is much more cost effective. काम तो हो ही रहा है घर पे बैठ के भी, so why bear the cost of the infrastructure? So this is going to be the new normal. So ability to work remotely in teams is also going
to be a big factor in selecting a person. ये काम कर पाएगा घर पे बैठ के, अकाउंटेबिलिटी लेवल है कि नहीं है, घर पे बैठ के काम करेगा या पबजी खेलेगा, you know. So these are the kind of changes that have come in the market. Over to you, Devam. I think I think I'll just add to this. मैं इस question को दो angle से देखता हूँ. One is like how Shivani said, it's more of the strategic side of recruitment. That okay, हम किस किस्म के talent को recruit करना चाहें, because talent की बहार है आज की date में, काफी लोग available हैं job market में, and at the end of the day, it is about वो कहते हैं ना, there are certain requirements of a company and then there are certain requirements of a candidate. जी उनकी आपस में शादी करनी होती है. So if I look at both sides, I'll say okay, आज की डेट में कंपनी को क्या चाहिए? Companies are under tremendous cost pressure. So companies want somebody who can just join in and start delivering from day one. They want someone who can adjust to their culture in times like today and are able to adapt well to some of the requirements, like Shivani said, remote working or remote working in teams for that matter. And companies are also looking at someone who can take ownership of whatever they do. Because आज की डेट में everyone has additional responsibilities, additional burdens. On the same lines, कैंडिडेट को क्या चाहिए? कैंडिडेट को इस समय चाहिए यार, ठीक है, डिसेंट अमाउंट पैसा मिल जाए, मेरे को ऐसी कंपनी मिल जाए जो एटलीस्ट मेरे को वैल्यू करे. ऐसा ना हो कि भाई मैं आज कंपनी में एंटर किया हूँ, 2 महीने के बाद बोलते हैं कि भैया सॉरी यू हैव बीन लेड ऑफ. एंड तीसरा ये है कि भैया ठीक है, एक वैल्यू सिस्टम्स मैच होने चाहिए. So I think it's a combination, it's a marriage between these two aspects, and that is where from a tactical standpoint, if I were to say, recruitment जो पहले एक face to face मिलने के बाद होती थी, now that suddenly has gone virtual. And let's also look at the impact that it has created. आज की डेट में कंपनी को नहीं पता कि यार बंदा कैसा है, बंदे को नहीं पता कंपनी कैसी है. So a lot of times you'll see that, why don't you work with us on a small project for a month and let's see, so एक mini project दे दिया, कुछ stipend दे दिया, and उसके बाद confirmation हो रहा है. So there are cases that are happening like these, like this in the market as well. So where companies are also testing out talent, and therefore choosing the right set to come in. The candidate also gets a chance to evaluate the organization and then take a pick. So I think fundamentally this is here to stay for some more time at least. मेरे हिसाब से at least for the next 2 or 3 quarters, I think this is how it will proceed. And like Shivani said, a lot of companies have actually decided to do away with physical offices. I think recently news में भी था, RP Goenka group was one such group which actually said that what, we'll work from home for life. So those are fundamental drastic shifts that are happening in the way we now start working professionally. So I think those would be my 2 nuggets, at least on in terms of recruitments, on how some of those practices are therefore changing. Yeah, absolutely, absolutely. And तो देवम एंड शिवानी, ये बताइए कि जैसे अभी आपने बात की कि रिक्रूटर्स देख रहे हैं, दे आर आल्सो लुकिंग एट कैंडिडेट्स के जो लोग उनकी कंपनी में वर्चुअली फिट हो सकते हैं, दे कैन वर्क रिमोटली, और जैसे शिवानी ने कहा कि काम को सीरियसली लें और वर्क फ्रॉम होम भी अगर कर रहे हैं तो वो काम पे ध्यान दें, ना कि गेम्स खेलें या कुछ और एक्टिविटीज में इंडल्ज हों. तो कौन से ऐसे टॉप सेक्टर्स हैं अभी राइट नाउ इन इंडिया जो जहां पे जॉब्स की डिमांड है और जहां पे एक्चुअली में रिक्रूटर्स हायर कर रहे हैं? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी हॉट हैं? यार मेरे हिसाब से okay, Shivani. Go ahead, Devam. Okay, so मेरे हिसाब से there are 3 or 4 really interesting sectors to look at. EdTech is clearly one sector that has really stood out. I think there's a lot of demand for a lot of professionals, whether you're a software developer, whether you have a certain skill that you can teach in the market, or whether you are a digital marketer. EdTech as a sector has been able to provide a lot of opportunities.
आई थिंक दूसरा ऐसा सेक्टर जो मेरे दिमाग में आता है आर यू नो और डेली एसेंशियल्स. So all your FMCG companies, उनके वहाँ पे अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, because that's a sector that you know is और daily essentials हैं यार, they have not really gotten affected by the pandemic. In fact, the demand Hmm. is only gone up. I think online delivery companies, whether you call it Amazon, whether you know Flipkart ho, Snapdeal ho, I think from from a perspective of those companies, I think that sector is really looking up. So I would rather call that under logistics. मेरे हिसाब से वो एक sector बड़ा important है. That is looking up. Healthcare, I think that's a no-brainer, right? In today's day and age, healthcare as a sector definitely is important. Whether you want to, whether it's the diagnostics team, whether it's proper hospitals, or whether any other meditech platforms हो, so उन sectors में मेरे हिसाब से अभी काफी demand है. So that would be my quick take on this. Shivani, you want to add on to this? Yeah, I just want to say that this pandemic has not been the same for everyone and every industry. I'm sorry. For some industries, like I said, जैसे hospitality, tourism, they've obviously had a very bad, stint. Shivani got dropped or what? Mm, Uh, Can you hear Shivam, me? yeah, Shivam, would you like to take a break and 1 minute Can का you hear break me? लेके let's get back?
Guys, we are back. तो या तो देवम ने जैसे एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हॉट हैं, तो शिवानी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? So I was saying that this pandemic has affected different sectors in a different way. कुछ सेक्टर्स जैसे मैंने बोला हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म बिल्कुल ही बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं. एंटरटेनमेंट, सिनेमाज एक्सेट्रा, malls, retails. But there are some sectors which have really boomed in this time. तो जैसे आपका हेल्थ केयर तो सबसे पहले इट इज बूमिंग. अनफॉर्चुनेटली इट इज, बट इट इज बूमिंग. Apart from that, e-retailers. So if you see, आप थोड़ी e-retailers का business performance देखेंगे in the last 6 months, companies like Amazon, Flipkart, they have done really very well. Because आज की डेट में हमारा क्या mindset है, मुझे अगर कुछ चाहिए तो Amazon पे सब कुछ मिलता है. I will just go onto the Amazon app and order whatever I need because मुझे market नहीं जाना. So what has happened is that physical retailing जहाँ पे कम हुई है वहीं पे online retailing increase हुई है. Delivery companies like Devam said, I don't know about food delivery. I think that still has taken a hit because people are still conscious. But FMCG retail has really done well. So and edtech, like Devam said, edtech companies again have boomed. Hardware, सबको घर में अब लैपटॉप चाहिए, कनेक्शन चाहिए, everybody needs a data card. So this hardware has really demand. Virtual connecting organizations, Zoom हो गया, Microsoft Teams हो गया. I think some Absolutely, of they've done a lot some of of those business. platforms have done really well. भाई पैंडेमिक से पहले हमें नहीं पता था व्हाट इज, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था जूम क्या होता है, या फिर गूगल पे एक गूगल मीट भी होती है, या कुछ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके भी होता है, वो तो अब पता चला है. एंड लाइक देवम सेड, देयर हैज बीन अ बूम इन दीस companies. Even I would say in small things like furniture. Now everybody's ordering for work from home workstations. So in fact, पीछे जिससे मैंने लिया था, we ordered this work from home workstation from them. He said कि मैम मेरी तो wait list चल रही है because there is so much of demand in Gurgaon and I'm sure everywhere else also कि मेरे पास स्टॉक ही नहीं है. So ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर्स की बैंड बजी है, ऐसा नहीं है. There are some sectors which have actually made advantage. It's been very advantageous for them, this pandemic. And and here I'd like to share our own personal story as well of positive vibes. हमने जब positive vibes शुरू करी थी 2016 में, that's when we had started off primarily as a corporate training company. And over the last 4 years हमने बहुत अच्छे clients बना लिए corporate trainings के. For example, we were working with all the 3 oil companies, Aditya Birla, JK Paper, and many others, good business houses of the country. Till the coronavirus pandemic hit us, and the first thing that the organizations did, everybody came under pressure, organizations came under pressure to save revenues, to save costs. So the first cut that was done was the training cuts. Training budgets were cut. Organizations said we are not going to do any more corporate trainings. There was a freeze in most of the organizations, even the big ones. So then we thought, now what for us? Is this going to be an end of the journey for us? या फिर हम बैठ के वेट कर लेते हैं कि जब ये पैंडेमिक जाएगा फिर दोबारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू होंगी, फिर हम we'll be back in business. या फिर हम इस पैंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करें. तो वी रियलाइज्ड कि इस पैंडेमिक में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं. तो हमने with the endeavor of helping such people, we started offering professional certification courses at very reasonable rates. And inka basically the objective of these certification courses is that you become job ready. And job ready not by getting theoretical inputs or theoretical knowledge, uske liye to bahut kuch hai internet pe, but getting actually the practical insights of the subject that you do.
एक तो वो, दूसरा हमने हर कोर्स के बाद कम से कम 2 से 4 घंटे की one-on-one मेंटरिंग करी है with all our participants, where we teach them, where we guide them, we mentor them on how to rewrite their CV, how to face an interview panel. We do mock interviews with them, हम उनकी तैयारी कराते हैं so that if they get a call for an interview, they should not be losing that opportunity. How to face an interview panel, how to face a stress interview, how to groom yourself, because interview is honestly the 15 minutes that you have to sell yourself. So Correct. you have to do the best sales pitch. So these courses, touchwood, अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें लोगों से, एंड कंटिन्यूसली हमारे बैचेस चल रहे हैं. So the point I'm trying to make is that one way to look at the pandemic is कि अरे भाई ये क्या हो गया, मतलब प्रॉब्लम आ गई लाइफ में. हाँ आ गई प्रॉब्लम, बट द अदर वे टू लुक एट इट इज कि इस प्रॉब्लम से हम क्या अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे निचोड़ सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, so that we remain relevant in the market. That is what any we've done it as a startup, but any professional would also should also do that. So invest yourself in see, also very very interesting fact is कि इस time पे organizations will hold on to those people whom they believe that these employees will help us wade through this crisis. तो वो employees आप बनिए, अपनी पर्सनल ब्रांड जिसको बोलते हैं, अपनी आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट करिए कि कल को जब डाउन साइजिंग की बारी आए आपका नाम कहीं होना नहीं चाहिए उसके अंदर, बिकॉज आपके बिना काम चल नहीं सकता. That's the brand that you need to create for yourself. Those are my 2 cents on this. I completely agree with what Shivani said in the end, that you have to position yourself in the organization, that अंगद के पैर जैसे खुद ही जमना पड़ता है. Has happened with me as well in the corona times. मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा खासा ले ऑफ चल रहा था, बट मतलब ले ऑफ तो चल रहा था बट लोगों ने छोड़ना भी शुरू कर दिया था जल्दी जल्दी. सो इट इवेंचुअली केम अप टू द पॉइंट कि यही लगने लगा था कि जब जा ही रहे हैं तो पूरी टीम फायर करके नहीं हायर कर लो. बट आई हैड इन माइंड कि नहीं, रुकते हैं, देखते हैं व्हाट हैपेंस, व्हाट कम्स नेक्स्ट. जब तक कंपनी रख रही है तब तक रहते हैं. लेट्स नॉट टेक एनी इम्पल्सिव डिसीजंस. एंड इट केम आउट विद अ गुड आउटकम फॉर मी. बेटर अपॉर्चुनिटी ही मिल गई, बड़ा रोल मिल गया, एंड हाइक भी मिल गया, सब चीज़ें हो गई. सो इट्स मोर अबाउट हाउ पेशेंट यू आर एंड हाउ यू नॉट टेक एनी इम्पल्सिव डिसीजंस, लाइक डिसीजंस इन द मोमेंट. देर आर सम टाइम्स जब आपको थोड़ा रुक के सब्र करके चीज़ों को प्रोसेस करना पड़ता है. सो आई गेस दीज टाइम्स आर दोज ओनली जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, बोथ विद योर जॉब एंड योर लाइफ, ताकि चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड कि सिंस एवरीबडी इज़ ऑन अ वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन राइट नाउ, सो देर आर 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू पीपल. एक तो विच एवरी वन इज़ नाउ डे सर्चिंग कि घर बैठे करियर कैसे चालू कर दें दोबारा, जिनकी छूट गई है, जिन्हें नहीं मिल रही है. सपोज देर आर पीपल जिनके पास 20-20, 22-22 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर एट अ वेरी हाई पैकेज. अब उनको कोई कंपनी सेम पैकेज ऑफर नहीं कर रही है, सो दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, ताकि वो जो आपने स्टार्टिंग में एक बात करी ना, मंथ एंड में एक पे चेक आता है विच इज़ ल्योरिंग, तो कुछ आना शुरू हो ताकि लाइवलीहुड कम्स बैक ऑन ट्रैक. एक तो वो चीज़ कि व्हाट आर द ऑल ऑप्शंस अवेलेबल, और व्हाट यू थिंक आर सर फ्यू ऑप्शंस जहाँ पर ऑनलाइन लोग वापस अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं. दूसरा, पीपल हु हैव slight experience, say for example beginners or intermediate 5 to 7 years of experience, जिन लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, where all they can search their jobs, how they should put themselves forth, again talking about the same, build their portfolio in a manner and showcase so that they are recognized and they are found. Would you like to take this question? Yeah, so शिव, मैं आपका पहला क्वेश्चन ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ that okay, I got tons of extensive experience, I've lost my job, and इस समय I need to sort of, let's say, restart my career. I could probably do freelancing, or I could join another company. It is an opportunity for me. Right. So I think
It's a very relevant question, especially when you've got like a good amount of experience. I think the way to look at this pandemic is, do you have some skill that you can offer to organizations as a freelancer? And that is what I would, that is how I would look at it. So let us say if I'm a graphic designer and I've done like great graphic designing for 10, 15 years, can I offer that to individual organizations? And there are platforms in the market जहां आप अपनी profile create कर सकते हो. I think flexing it is one company. उसी के जैसे I think freelancing के और भी दो तीन interesting platforms हैं where you can actually create your profile and offer your services to organizations, as a project. So whether you're a graphic designer, whether you're a consultant like myself, whether you're a web developer who's got extensive experience, I think companies are looking to uh, hire freelancers today more than ever before because cost pressures हैं company के पास and they'd rather buy services of someone who's highly skilled and not pay him or her the full salary. So I think if you're looking at at this as an opportunity to launch yourself into the freelancing world of business, I think great. There's no harm in trying that. There are platforms in the market. Please go and sort of experiment. If you're of the second category, saying that okay, I need to find another job, and I think what is important for you is to understand कि आपके negotiables और non-negotiables क्या हैं. Hmm. So, Very so true. clearly, I think you can't say that salary in today's time is going to be a non-negotiable for me. Let us say आप 20 लाख रुपए कमा रहे थे या 25 लाख रुपए कमा रहे थे, and if you want to say that okay, यार, I am going to join a company and also expect like a 30% hike, then all the best to you. Maybe you will get one, maybe you won't. Right. But I think at this point in time, uh, if I was in that situation, for me, a non-negotiable would be okay, I need some money to come at the end of the month. Okay. Now that some money could be 20 lakhs divided by 12, or it could be 15 lakhs divided by 12. But at least I need to start getting some income home. So for me, I'll probably leave that ego of a fat pay package aside and say, okay, you know what, I'm very good at what I do. Companies will want to lap me up. So here I am available in the job market. Salary is negotiable, uh, but my value system is a non-negotiable. So I'd rather join a company that values my services. So I hunt in the market. I use my LinkedIn search. I develop a great CV. Maybe I, offer some, let's say, free 1 month assignments to showcase my skills. So I will go that entire. I will use this opportunity to actually do this whole hog till the time I actually get hired. Hmm. So that would be Shivam, Anurag, my 2 cents on the first question. So whether you're of the job type or whether you're looking at whether you're someone who's wanting to launch a freelancing career, I think if you have the skill sets and the experience, I think आप दोनों चीजें कर सकते हो. Question is, how are you looking at this? So, second question, sorry, आपका क्या था? सेकेंड क्वेश्चन वाज मोस्टली ऑन के जो फ्रेशर्स हैं और जो जिनके पास लेट्स से 5 to 7 years एक्सपीरियंस है. तो एक तो हो गया जिनके पास 20+ years के एक्सपीरियंस हैं. This question was more for freshers and somebody who has just started off or they are still new in corporate life और उनकी जॉब चली गई है या they are looking for a change. तो वो लोग किस तरीके से effectively जॉब हंट कर सकते हैं? देखो, I think this time has only pronounced the importance of virtual social networking. So जहाँ आप face to face
नेटवर्क नहीं कर सकते, प्रोफेशनल नेटवर्किंग नहीं कर सकते, आई थिंक दिस इज अ टाइम, इरिस्पेक्टिव अगर आप 20 साल के एक्सपीरियंस वाले हो या 2 साल के हो या एब्सोल्यूट फ्रेशर हो या 5 साल एक्सपीरियंस वाले हो, आई थिंक इम्पोर्टेंट फॉर each one of us is to have a very strong professional virtual profile. And when I say that, what does your LinkedIn profile speak about you? What is the kind of work that you've done? आपके आप do you have any references for your work? Can I see your work? Uh, आपका social signal क्या बोलता है? What does your Facebook profile say for that matter? Or are you active on Twitter? What kind of point of views are you putting across uh, in the world? आप कौन सी कंपनीज को फॉलो करते हो, कौन से इंडिविजुअल्स को फॉलो करते हो, ऑल ऑफ दैट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम्स. And I think Shivani did mention about personal brand, and I think this is the time where a personal brand needs to stand out for everyone. And conscious effort आपको हर एक को डालना पड़ेगा to actually create a personal brand and aura for themselves, because that is how you will then stand out from the crowd. So वो एक बड़ा important factor है. So, and in terms of see jobs, I think like we said, there are so many sectors that are hiring today, and if I were to just, let's say, off the hat, just think through, okay, what could be some of the jobs that are available in the market. I think healthcare professionals तो हैं ही, उसके अलावा आप रिटेल सेल्स में जा सकते हैं, आप लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं, यू कुड बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आई थिंक डिजिटल मार्केटर्स, there is a huge demand for digital marketers. There's a reasonably good demand for graphic designers. I think financial and tax planners. There's a huge demand for them as well in the market today. Data analyst. Companies going digital. There's a huge demand for data analysts. So I think these are some of the jobs that are really in demand today. And question is, अगर आप इन jobs में आपने पहले काम किया है, the time is very important today to make sure that you really stand out, and you are known for what you've been doing. So if I'm a data analyst, I would want to showcase my projects to the world. I will have links on my LinkedIn profile where prospective recruiters can see my work. I will have people talking about me or giving me recommendations on LinkedIn, that yes, okay, Devam Malhotra, has worked on XYZ project, and his data analytics skills are very good. I will invest in myself and upskill myself. मैं courses करूंगा ताकि यार मैं और my profile becomes more marketable to recruiters. So I think the time has not been more pronounced than what it is today in terms of really upskilling yourself and developing your own personal brand. शिवानी, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें व्हाट डू यू फील, लाइक फॉर स्पेशली फॉर यंग कॉर्पोरेट गाइज हु हैव लेट्स से 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, और मे बी फ्रेशर हो, अभी निकले हो कॉलेज से बाहर, अब दिक्कत आ रही हो, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू यू फील कि किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए उनको इनिशियली? देखिए, ऐसा है कि right now there is a plethora of courses available online. Definitely this is the right time to invest in yourself, to upskill yourselves, because abhi job nahi hai, तो use this time to upgrade your skills, so that when the market gets opened finally, abhi to market फिर भी थोड़ा सा मतलब it is still under a lot of constraints, but once the market opens fully, that should not be the time when you are actually investing time in upskilling yourself. So use this time judicially. If you are sitting at home, of course your job search will continue, but also do some worthwhile courses, and which you can actually put in your CV and showcase in your CV that you were not just sitting idle, you were investing in yourself even while sitting at home. So definitely training and development के लिए इससे better timing नहीं है.
क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है ये करने के लिए. एक बार ऑफिस जाना स्टार्ट कर दोगे, so we all know कितना ड्रेनिंग उसके बाद. So राइट राइट. yeah, definitely the time to upskill yourselves. नहीं, दिस एंड इज. शिवानी, ये इस टाइम पे जैसे अब आपने कहा कि हम लोग ट्रेनिंग में इंडल्ज हो सकते हैं, अपस्किलिंग में इंडल्ज हो सकते हैं, बट होता क्या है ना कि जब घर पे होता है कोई, स्पेशली यंगस्टर्स एंड स्पेशली जेन जी जब घर पे बैठी हुई है, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, राइट? और अगर वो कहीं काम भी कर रहे हैं, लेट्स से इफ दे आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, आल्सो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो हाउ डू यू स्टे प्रोडक्टिव इस टाइम पे वर्किंग फ्रॉम होम? See, that is not the problem of Gen Z only. That's a problem of X, Y, Z everyone. जो भी घर पे बैठ के काम कर रहे हैं. Because obviously घर पे, see, one is that we all have never worked like this. हम सबको ऑफिस जाने की आदत है. हम सबको we had a certain routine that we were following, and somewhere we were associating work with office. Now suddenly that office has moved to the place where we don't associate work with, which is our home. घर पे आके हम रिलैक्स करते हैं और काम करते हैं. बट अब सडनली क्या हो गया है, द ट्रांजिशन हैज बीन मेड टू कि घर घर भी, अब घर पे ही ऑफिस भी है, और घर पे ही घर भी है, और घर पे घर वाले भी हैं, और टीवी भी है, और सब कुछ है. तो इस केस करेक्ट. में क्या है, इस केस में जो बहुत जरूरी चीज है, और ये सिर्फ लाइक आई सेड एक सेट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, इट्स आल्सो फॉर पीपल लाइक अस, हु आर experienced people but still working from home. Always have a routine, set routine for yourself, even if you're working at home. Because बिना routine के you will be, your timings will go haywire. आप कभी भी उठेंगे, कभी भी लैपटॉप पे बैठेंगे, अच्छा बीच में लंच टाइम आ गया, चलो एक और नेटफ्लिक्स पे एपिसोड देख लेते, चलो एक और देख लेते, चलो एक और, देखते देखते 5 बज जाते हैं, फिर हम रात पे बैठ के काम करते हैं. एंड देन वी से कि यार वर्क फ्रॉम होम में तो कोई टाइम ही नहीं बचता, हम सुबह लैपटॉप खोलते हैं और रात को लैपटॉप बंद होता है. तो वो क्यों होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि काम बढ़ गया है, वो इसलिए होता है कि हम बीच में इधर उधर बहुत डिस्ट्रैक्शंस है हमारे पास, एंड वी डिसाइड टू give into those distractions. So have a routine, have a set time of waking up. I'm sorry. मेरा तो बड़ा टैक्टिकल हिसाब है यहाँ पे. आई एम गोइंग टू गिव लाइक 2 or 3 वेरी टैक्टिकल टिप्स. वो है ना, जब बचपन में हम स्कूल जाया करते थे तो भाई एक टाइम टेबल होता था कि यार आज ये पीरियड है, आज दूसरा ये पीरियड है, तीसरा स्कूल का बैग पैक कर लो. ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ स्कूल किड यार. जहां आप काम कर रहे हो वहां पे आप एक टाइम चार्ट अपना लगा लो कि भाई ठीक है, 9 o'clock आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओपन माय लैपटॉप. 9 से लेके 10:30 बजे तक मैंने ये काम करना है. एंड 10:30 बजे से 11 बजे ठीक है यार, मैं कॉफी ब्रेक पे जाऊंगा. तो भाई अपने व्हाट्सएप पे बड़ी ग्रुप बना लो आप. ठीक है, सारे बड़ी साथ में काम करो. ठीक है, फॉलो द सेम कॉमन टाइम टेबल, go on common coffee breaks, go on common chit chat breaks, and frankly, while you're still apart, but your need for socializing is met. My second tip is यार, जहां तक पॉसिबल है वर्क स्टेशन और टीवी स्टेशन अलग अलग रूम्स में अगर हो तो बेहतर है. बिकॉज कई बार लाइक शिवानी सेड, यार मेरा ना कल रात को नेटफ्लिक्स का एपिसोड के 15 मिनट बचे हुए थे, अभी देख लेता हूँ मैं. तो वो 15 मिनट चालू होते हैं, फिर वो 15 मिनट के आधा घंटा हो जाता है, आधा घंटे का यार सेकंड एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड भी देखता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे यू नो ये सीरीज आ गई है, आई हैव टू वॉच द नेक्स्ट वन. एंड then it just goes haywire, right? So राइट. राइट uh, राइट. my my second tip is कि भाई जहां आपका टीवी है वहां आप बैठ के ना काम करें तो शायद आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे. और एंड दूसरा दूसरा I would also just add on here that अगर आप घर से भी काम कर रहे हैं, तो डोंट सिट ऑन योर डाइनिंग टेबल और योर बेड और रॉकिंग चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं. डोंट डू दैट. थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रॉपर वर्क स्टेशन, टेबल, चेयर लीजिए, अपने घर में ऑफिस जैसा माहौल बनाइए. एटलीस्ट इन वन रूम you should have everything what your office has. Whether it's about spending some money, but then it's worth it, completely worth it. If you need whatever stationery you need, whatever, because visual things also have an effect. So when I know there is when I come into this room, I know this is my work room, and this is where all my working stuff is. So here there is no TV, nothing.
and I know that I have to sit and work here. But if my Correct. bedroom becomes my Correct. workstation, then the temptation of TV, etc., is all there. So, jahan tak possible ho paye, take a proper workstation, a chair and a table, and put it in one room, which has no other distractions for yourself. And make sure that and you put जैसा आपका ऑफिस का वर्क स्टेशन है उसे बिल्कुल वैसा ही बना लीजिए. Keep a whiteboard. I've kept a whiteboard here. Keep a whiteboard, write your daily things that you do, keep your stapler, pencil, everything that you need there, so that it gives you a feel of an office. You can take And reference. You can take reference from my screen. I have a whiteboard. I have my yes, utensils. I have my toolkit. So as soon as the work from home started, I started implementing. I take which it is from a very very good. psychological perspective. I guess the body adapts to the place you sit. So if you're Yes. working on the bed, your body has adapted for the situation that when you come on the bed, you are in your leisure mode. When you are on your chair, Correct. on your workstation, you are in a working mode. So your brain works in a similar fashion. तो ये Absolutely. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. भले ही आप छोटे कमरे में रहते हो, बट इट्स देखो, नेसेसरी कि आप एक अलग कोना हाँ बना हाँ लीजिए. आप एक सेक्शंस अलग कोना बना सेग्रीगेट लीजिए करें. जो सिर्फ आपका कोना है, राइट. और जहाँ पे आपको पता है कि now this is my work zone. राइट. And even your family members know that this is your work zone. They are not supposed to disturb you between this time and this time. राइट. अच्छा, और हमें इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में बहुत सारे घर के काम भी करने पड़ते हैं. तो ऐसा शेड्यूल बनाइए दैट यू फिनिश ऑफ एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग. ऐसा नहीं हो कि अच्छा मैं एक घंटा काम किया, अब मुझे जाके दाल चढ़ानी है, उसके बाद मुझे पोछा मारना है, एंड ऑल ऑफ दैट. टेक आउट टाइम. ऑल ऑफ अस आर डूइंग द हाउस वर्क, बट वी नीड टू टेक आउट टाइम. वी नीड टू शेड्यूल आवरसेल्फ. तो इसलिए बड़ा जरूरी है एक रूटीन रखें अपना. प्लानिंग से चलेंगे तो ये वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा चलेगा. और इसमें बहुत जरूरी है कि सिर्फ काम ही नहीं करें, हम थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालें. एटलीस्ट 30 मिनट्स निकालें अपने लिए पूरे दिन में. डिफिकल्ट नहीं है. अब तो कम्यूटिंग पे जो हम टाइम वेस्ट करते थे दिल्ली गुड़गांव की सड़कों में, दैट टाइम इज व्हाट वी आर सेविंग. एंड लेट्स यूज दैट टाइम टू डू थिंग्स दैट वी ट्रूली एंजॉय. चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो डांस है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो कुकिंग है. एक चीज दिन में जरूर ऐसी करें जिससे आपको पर्सनली खुशी मिलती है, because that is also important. Because unfortunately what has happened in this pandemic, because of the fact that we are stuck at our homes for such a long period of time, it's taking a toll on the mental health of people as well. तो अब अपनी मेंटल हेल्थ अपने हाथ में ही है. इफ वी वन इज वी कैन कीप लिविंग, अरे यार कितना टाइम हो गया पार्टी नहीं करी, कितना टाइम हो गया दोस्तों से नहीं मिले. बट अगर हम वही टाइम वी इन्वेस्ट इन डूइंग थिंग्स दैट वी रियली लाइक, चाहे वो बुक पढ़ना हो, चाहे वो गेम खेलना हो, चाहे वो दोस्तों से जूम पे बात करना हो, जो भी हो वो करेंगे, तो देन आई थिंक ये टाइम अच्छा कटेगा सबके लिए. Alright, we have this is very true कि जो है सब चीज़ों के बीच में काम जो है काम को प्रायोरिटी दे और बाकी काम को भी प्रायोरिटी दे, बट यू हैव टू सेग्रीगेट द टाइम. टू क्विक क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस फॉर आवर एक्सपर्ट्स. पहला है प्रीति का. हाय एवरीवन, आई वांट टू आस्क इफ दिस इज़ अ गुड टाइम टू चेंज करियर. शुड द कैंडिडेट एक्सपेक्ट अ सेम सैलरी, लेस और मोर, if he or she gets a new role in the same organization? So मतलब इंटरनल प्रमोशंस या अगर जो है जॉब चेंज मिलता है इंटरनल, तो शुड दे बी एक्सपेक्टिंग अ हायर सैलरी और अ सेम सैलरी और अ लेसर सैलरी? व्हाट? So that completely, it's a very good question. First of all, see, that completely depends on the financial health of the organization. और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सो यू हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ इंटरनल डेटा कि व्हाट इज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी. इज इट doing well, or is it struggling with its revenue? See, if you clearly know that the company is struggling with its revenues, then don't just look at the opportunity as something to earn more money with. Think of it as an opportunity that you have got in the pandemic, as a part of your professional growth. And money will come at a later date once the company comes in a better health. But if your company has the capability to pay right now, I think, why not? But the point that I'm trying to make here is that you are the best judge. ऐसा कुछ नहीं होता कि हम expect करें या ना करें. You have to see whether the company is in a position to pay you right now or not. And maybe talk to them that okay, right now
times are tough, but at a later date, when times get okay, will I get a salary hike or not? That's the question that you should be asking your company. I think I will go back to basics. Preeti, great question. I think for Preeti to also evaluate is, I think I'll just break her question down. One, should she be changing jobs at this time? A question to her is it really needed? Why are you changing your job? And if your answer to this question is yes, then we'll go on to the second question that, okay, can I expect a pay hike? Well, everyone expects a pay hike when they change their jobs, but times are different. And like Shivani said, it depends on what job you are in and and whether the company can actually afford a pay hike or not. So वो mutual discussion after you have been selected, वो तभी पता लग पाएगा. All right. Next quick question, last question for today is work from home should also have fixed working hours. What's the expert opinion in this? ये तो बड़ा debatable है. ये तो बहुत debatable है. देखिए फिक्स्ड आवर्स होंगे अगर आप फिक्स्ड रखेंगे उनको तो then it will be fixed hours. This is what we advise to our corporate clients as well, especially the HR people, that try and understand that people have other priorities as well in their lives right now, and expecting that they're at home so they'll be available for a call or a meeting at any point in time is unrealistic. And somewhere I think as professionals we should also set limits to our work timings and make it clear in the organization that these are the timings, between the office timings we are all available to work. Of course beyond work we can be available once in a while, but if it becomes a daily routine, then it's something to talk about with your HR or your boss or someone, because it does put a significant amount of pressure on your personal life as well and your own stress levels as well. So and secondly, like I said, अगर रूटीन नहीं रखेंगे तो फिर वर्क फ्रॉम होम एक्सटेंड ही होता रहेगा. सो मेक श्योर यू हैव सेट आवर्स ऑफ वर्क and set hours for your, just like the way you used to do in office, आधे घंटे का lunch break, बीच में 10 मिनट की coffee break, sutta break, whatever it is you want to go for, but make sure that you are back on your workstation after that. So if you consider this work from home like the way you were working in office, then it's not going to be a challenge. But if you get distracted by 100 other things at home, then obviously this is going to be a challenge, and you will find that कोई end है ही नहीं है working hours पे. That's so my my two cents here, in fact, I'm going to use one of my nuggets from my one-to-one mentoring sessions with an individual. So his core issue was around this itself कि यार मेरा बॉस ना मेरे को कभी भी फोन कर देता है, and somehow रात के 9 बजे हैं या सुबह के 7 बजे हैं, I am working all the time. So यार, how do I get out of this rut? And what Shivani says also has a lot of merit. But when you're working from home with added responsibilities of also managing the housework, that is where things get a little murkier. यार बॉस को लगता है कि यार 10 से 12 बजे मेरे को घर संभालना है, बच्चे की पढ़ाई देखनी है, सब करना है, इसलिए मैं 7 बजे फोन करूंगा. एम्प्लॉय कह रहा है यार मैं तो हर वक्त ही काम कर रहा हूँ. सो आई थिंक दैट इज वेयर transparency in terms of timings of work becomes very critical. तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, I think it is absolutely all right for you to have a discussion with your boss and agreeing that okay, these are going to be our work timings, and it is absolutely fine to even convey that what, as per company policies I am going to be working for whatever 8-10 hours a day, because हर कंपनी में ये डिफाइंड होता है कि यार आपके वर्किंग आवर्स कितने घंटे के होते हैं. नाउ इन टाइम्स लाइक दीज द फ्लेक्सिबिलिटी इज विद यू दैट अच्छा ठीक है यार आप 7 बजे सुबह काम कर रहे हैं या आप रात को 10 बजे तक काम कर रहे हैं, बट व्हाट आर दोज आवर्स that work for both you and your boss. I think that conversation is very important to be had, because a lot of times ताकि सबको पता रहे यार कि यार अगर देवम मल्होत्रा को कोई चीज डिलीवर करनी है, so my boss knows that it's going to reach him at about 8 o'clock in the night, and it's fine, so that he can communicate to his relevant stakeholders कि यार
ये आपके पास इतने बजे आएगा. So I think that level of transparency is key here. So please don't feel shy of having this conversation with your boss and say, boss, okay, during the day these are the hours that work for me. Let me know what hours work for you. And हम एक mutual consensus पे हम काम करते हैं कि भैया ठीक है, कॉल करनी है, डेली कॉल करनी है, कैचअप कॉल करनी है, इस टाइम से इस टाइम पे हम करेंगे, आई विल बी अवेलेबल. रिव्यू कॉल करनी है या मीट करनी है तो इस टाइम से इस टाइम पे करेंगे. तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक हल एटलीस्ट मेरे को समझ में आता है जो चल सकता है एंड विच कैन मेक लाइफ इजी फॉर एवरीबडी, बोथ प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली. टाटा स्काई का ऐड था ना, पूछ के तो देखो एक बार. सो मे बी आपकी परेशानियाँ उस चीज़ से हल हो जाएंगे. थैंक यू सो मच पीपल फॉर आस्किंग दीज relevant questions to our experts, and I hope you guys got your answers. And a big thanks to Shivani and Devam for joining us for today's session, guys. It was great having you both. और हर बार हर सेशन घूम फिर के मेरी तरफ आ जाता, तो कुछ बातें तो मुझे हार्ड हिट हुई, वो नेटफ्लिक्स वाली और बीच में डिस्ट्रैक्ट होने वाली. सो ठीक है, कोई बात नहीं. आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ ओवर इट. थैंक यू सो मच अगैन. एंड होपफुली एक बार फिर किसी ना किसी लाइव स्ट्रीम पर हम लोग आपसे मिलेंगे, फिर कुछ और ऐसी करियर रिलेटेड बातें करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारी जनता के वो आप लोग आंसर करेंगे. थैंक यू गाइस, इट वाज ग्रेट हैविंग पॉजिटिव वाइब्स ऑन द पैनल टुडे. Thank you. Thank you, Shivam and Anurag. Thank you for inviting us, and we truly enjoyed this session, this interactive session with you both. It's a great initiative that you guys have taken. So all the best. थैंक यू सो मच. तो गाइज इसी के साथ आज की लाइव स्ट्रीम यही एंड करते हैं. अगले संडे फिर मिलेंगे, संडेज विद नमस्ते इंडिया में, कुछ और बढ़िया टॉपिक्स के साथ, कुछ और अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ. और आप लोगों के जो भी सवालात हो इससे रिलेटेड वो आप हमारे स्ट्रीम पर पूछ सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, एंड वी विल गेट आंसर्स फ्रॉम दीज एक्सपर्ट्स फॉर यू. तो अगले संडे के लिए फिर से रेडी हो जाइएगा सुबह 10:30 बजे. अपना ब्रेकफास्ट हमारे साथ करना भूलिएगा नहीं. तब तक के लिए नमस्ते इंडिया. नमस्ते इंडिया.